कौशल गुप्ता, वेद प्रकाश गुप्ता की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हाथ बहुत ज़्यादा हिलते थे, पैर भी नहीं उठते थे, घिसड़ा के चलते थे, गर्दन में भी बहुत पेन रहती थी, सर में भी दर्द रहता था। लोकल डॉक्टर को दिखाया, उसने बताया कि मेरे को पार्किंसन है। इसके बारे में फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने डॉक्टर रोहित बंसल से कंसल्ट किया। So when I examined him in the OPD, I diagnosed him as a case of advanced Parkinson's disease. So Parkinson's disease is a serious neurological disease. It is a progressive neurological disease wherein there is a continuous depletion of a chemical called dopamine in the brain. Because of depletion of dopamine in the brain, a lot of symptoms keep on developing like tremors, most prominently tremors and stiffness of the body. डॉक्टर रोहित बंसल ने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। He was on medications for a long time and he started showing side effects of the medications. So this is a particular condition we call as advanced Parkinson's disease, where the symptoms of Parkinson's disease are not controlled by the medications and the medications themselves start showing side effects. So this is where the role of surgery comes into play. In recent advances, DBS has come forward as a better solution and a better companion to the medication to fight this problem. What DBS does, we put an electrode at the center of the brain where the dopamine is produced. And that is connected with a pacemaker that is implanted into the chest wall. So as a result of this, that counteracts the effect of depleting dopamine in the brain, and all the motor symptoms of Parkinson's disease immediately vanish. Soon after the surgery, all his tremors disappeared, his stiffness, his rigidity disappeared, and his bradykinesia, that is slowness of the movement, also gradually improved. अब मेरे को हाथों में ट्यूमर्स नहीं है, पैरों में भी काफ़ी आराम है। तो अब अपने आप चल फिर लेते हैं, सब कुछ अपना काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती हमको। मैं डॉक्टर रोहित बंसल और उनके स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ और BLK मैक्स का भी आभार प्रकट करता हूँ।